Good morning, students. Now we are going to start next unit, that is unit 4, that is welding processes. So this one is the first lecture of welding process. Here in this lecture we will study about the brief introduction about the welding process, what is the weldability, and then what is the classification of welding process. Okay. So let's start. When we will talk about the welding process, so welding is like a joining process of two same material or two different material with the application of temperature, with or without application of pressure. Okay, so temperature will be must in all the cases. Temperature will be generated, and there may be a requirement of pressure or there may not be a requirement of pressure during the welding. It will depend upon the type of welding. Okay, so mainly जब हम दो मटेरियल्स या दो डिफरेंट मटेरियल्स के ज्वाइनिंग की बात करते हैं, देन वी प्रेफर द welding process. So the particular combination of these variables can ranges from high temperature with no pressure to high pressure with no increase in temperature. So if you will say welding process, that is called positive process. That means it's addition of the materials. When we will call machining, then that is negative process, because in case of machining process, subtraction of material will take place to provide a particular shape. Then forming, casting, these are the primary shaping process, which is also known as zero process. That means there is no any addition or reduction of material take place during these processes. So here welding is a kind of positive process where addition of material will take place to provide a particular shape. Now when we will talk about the history, so welding started from the friction welding, that is also known as forge welding. So in 19th century it's start from forge welding, and then in for next generation it's developed, and arc welding and oxy fuel welding will start, and resistance welding will also start similarly. So main development in welding processes will take place during the World War First and World War Second. So as per need and as per requirement, the development take place during these world wars. So in fact in duration of World War Second, some advanced welding processes are also developed, like explosion welding, then electric beam welding, laser beam welding, submerged weldings. Okay, so some advanced welding also developed during the World War Second. Now in modern scenario, in industrial age, in case of automation in industries, robot welding is also comes in the picture. Okay, for the industrial application. Now, requirement for a high quality welding. So what are the requirement? A source of satisfactory heat and pressure. So whatever requirement of heat and pressure is required, that should be available there. It will depend on the thickness of the workpiece and the property of the material of the workpiece. A mean of protecting or cleaning the metal to avoid or compensate for harmful metallurgical effects. So these are the high quality welding requirements. Okay, sufficient amount of heat and pressure, then protecting or cleaning the metal, then it will show the quality of the weld surface. Okay, and then to avoid the harmful metallurgical effects, so it will compensate, it will avoid the metallurgical reactions during the welding process. Now the term weldability. So what is the meaning of weldability? The ability of material to being easily weld is known as weldability. जो material जितना easy way में weld हो जाए, उसकी weldability उतनी high होगी. Okay.
For resistance welding of consistent quality, it is usually necessary to remove the oxide immediately before welding. Fabrication weldability test is used to determine mechanical properties required for satisfactory performance of weld joints. So, if you will want to know about the weldability, so it's simply जो मटेरियल जितना इजली, जितना आराम से हम जिस किसी मटेरियल की वेल्डिंग कर सकें तो उसकी वेल्डेबिलिटी उतनी बेटर होगी, उतनी अच्छी होगी. फॉर एग्जांपल जैसे सॉफ्ट मटेरियल है तो उसकी वेल्डेबिलिटी अच्छी होती है, लाइक माइल्ड स्टील. वहीं अगर हम कास्ट आयरन की बात करें या अदर ब्रिटल मटेरियल की बात करें, सो ड्यू टू मेटलर्जिकल प्रॉब्लम उनकी जो वेल्डेबिलिटी होती है वो बेटर नहीं होती है. Okay, so here some kind of material which is compared. Aluminium have a less weldability in comparison to copper. Then copper have a less weldability in comparison to cast iron, and cast iron have a less weldability in comparison to mild steel. So it not means that these materials cannot weld, but weldability will define the ability, the ease of material to being welded. Now, case of aluminium. When we will talk about the aluminium, the weldability of aluminium is very poor. Okay, the oxide coatings on aluminium alloy causes some difficulty in reaction to its weldability. It also has high thermal conductivity and a very short temperature range between liquidus and solidus. And when liquidus is viscosity is very low, aluminium is poor absorber of laser light. During fusion welding, the aluminium would oxides so readily that special fluxes or protective inert gases atmospheres must be employed. कहने का मतलब ये है कि अगर हम एल्युमिनियम की जब वेल्डेबिलिटी की बात करते हैं तो उसकी वेल्डेबिलिटी बहुत लो होती है, बिकॉज एल्युमिनियम के ऊपर जो ऑक्साइड कोटिंग होती है वो रिएक्शंस होने में जो मेटलर्जिकल रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से मटेरियल मेल्ट करके फिर लिक्विड फॉर्म में जाता है, फेज चेंज होता है, तो उन सब में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ऑक्साइड जो लेयर बीच में आती है कोटिंग की. देन एल्युमिनियम इज अ पुअर एब्जॉर्बर ऑफ लेजर लाइट, तो जो हीट है उसका पुअर एब्जॉर्बर है, दैट इज ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम. वैसे ही कुछ और भी मटेरियल्स हैं जिसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, दैट इज कास्ट आयरन. सो कास्ट आयरन इज ऑल्सो ब्रिटल मटेरियल. सो ब्रिटल मटेरियल की जो वेल्डेबिलिटी होती है वो पुअर होती है. एंड इन केस ऑफ कास्ट आयरन जब हम बात करते हैं तो कास्ट आयरन में जो कार्बन कंटेंट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं बिकॉज इट्स अ ब्रिटल मटेरियल. सो एट द टाइम ऑफ वेल्डिंग जो कार्बन कंटेंट्स हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं एक जगह, एंड दे कैन नॉट फॉर्म अ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर. सो वहाँ पे हीट अफेक्टेड जोन ज़्यादा बनता है, मेटलर्जिकल डिफेक्ट ज़्यादा आते हैं, जो वेल्डिंग बॉन्ड बनता है या वेल्डिंग पूल बनता है वो उतना ज़्यादा हाई स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. नेक्स्ट मटेरियल है, दीज आर सम डिटेल्स जिसको आप स्टडी कर लेना. नाउ स्टेनलेस स्टील. सो स्टेनलेस स्टील इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू वेल्ड बिकॉज इट्स कंटेन बोथ निकल एंड क्रोमियम. The best method of welding stainless steel is TIG welding. Electric arc is also preferred. So there are some different kind of welding processes जिनके थ्रू इनकी वेल्डिंग पॉसिबल है. ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, बट एक जब नॉर्मल हम वेल्डिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती हैं, एंड ड्यू टू दैट मेटलर्जिकल इफेक्ट. सो आफ्टर स्टेनलेस स्टील की अगर बात करें तो यहाँ पे भी इसकी वेल्डेबिलिटी लो होती है. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग. व्हेन वी विल टॉक अबाउट द वेल्डिंग, तो वेल्डिंग दो तीन स्टेजेस में होती है. एक तो सॉलिड फॉर्म में ही वेल्डिंग हो जाए, मटेरियल मेल्ट ही ना हो, दैट इज सॉलिड स्टेज वेल्डिंग. देन नेक्स्ट वन इज लिक्विड स्टेज वेल्डिंग, जिसमें कि मटेरियल पूरी तरह मेल्ट होता है, मेल्ट होने के बाद जो फ्यूज होता है एंड देन सॉलिडिफाई होता है.
एंड थर्ड वन इज सॉलिड लिक्विड स्टेज वेल्डिंग, दैट मीन्स इट्स अ सेमी सॉलिड, जिसमें कि मटेरियल ना पूरी तरह मेल्ट होता है ना पूरी तरह सॉलिड रहता है, एंड देन उसके थ्रू जो है प्रेशर के थ्रू उसमें बॉन्ड जनरेट हो जाता है। तो अब यहाँ पे सॉलिड स्टेट से स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी विल टॉक अबाउट द सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, देन इन केस ऑफ ऑल काइंड ऑफ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, हीट and pressure both is required to weld the metal. When we will talk about the liquid state welding, then in case of liquid state welding only heat is required, no any kind of pressure is required to weld the material. And when we will talk about the solid oblique liquid state welding, so here also main role is heat. Heat source is mainly required, not pressure source is required. So pressure is only required in solid state welding. In case of solid state welding, without pressure welding cannot be possible. But in case of liquid state or solid oblique liquid state, only heat is mainly required, not pressure. So solid state welding की अगर बात करें तो नाम दिए गए हैं, that is cold welding, friction welding, diffusion welding, hot forge welding. ओके, कोल्ड वेल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रेशर वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, दैट आर नोन एज कोल्ड वेल्डिंग. So we have to also study about the solid state welding and mainly about the cold welding. So pressure welding, ultrasonic and explosive, these are three kind of welding जो कि हमें अपने सिलेबस में स्टडी करना है. So later we will discuss in detail. Now liquid state welding, when we will talk about the liquid state welding, so it will electrical energy base or chemical energy base. When we talk about the electrical energy base, then arc welding, that means electric arc welding and resistance welding. इसमें भी बहुत सारे कई हैं जो कि हमें डिटेल में पढ़ने हैं सारे वेल्डिंग. तो आर्क वेल्डिंग एंड इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग एंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ये पूरा सिलेबस है. देन केमिकल रिएक्शन बेस्ड अगर हम बात करें तो गैस वेल्डिंग एंड थर्मिट वेल्डिंग, तो गैस एंड थर्मिट बोथ आर इन सिलेबस. तो अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करें तो लिक्विड स्टेट में जितने तरह की वेल्डिंग्स आती हैं वो सारी वेल्डिंग्स सिलेबस में हैं और वो सारी वेल्डिंग हमें पढ़ना है. नेक्स्ट सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड स्टेट की बात करें तो ब्रेजिंग, ब्रेज वेल्डिंग, सोल्डरिंग. सो ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग, दीज आर द टॉपिक्स विच आर विद इन सिलेबस. तो हमें ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग पढ़ना है. ब्रेज वेल्डिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जिसको हम लोग कवर करेंगे. When we will know about the name, so here arc welding, electric arc welding. तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में देखें कितने तरह के वेल्डिंग्स हैं यहाँ पे. कार्बन आर्क वेल्डिंग, फ्लक्स कोर्ड आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, TIG, MIG, देन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग. सो समझ आ, तो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ आर्क वेल्डिंग जिसको हमें स्टडी करना है. नाउ ब्रेजिंग की अगर बात करें तो वैसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेजिंग यहाँ पे नाम दिया गया है. देन ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग की बात करें तो ऑक्सी एसिटिलीन हो सकता है, ऑक्सी हाइड्रोजन हो सकता है, प्रेशर गैस हो सकती है. बट वी हैव टू मेनली स्टडी अबाउट द ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग. ऑक्सी एसिटिलीन को हमें अच्छे से डिटेल में पढ़ना है. सिमिलरली रेजिस्टेंस वेल्डिंग की बात करें तो दैट इज ऑल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, दैट इज फ्लैश वेल्डिंग, हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस, precision welding, projection welding, resistance seam welding, resistance spot welding, upset welding. So these are different kind of resistance welding, but mainly हमें flash welding, then projection welding, seam welding and spot welding, ये चार main हमें study करने हैं. Then solid state welding की बात करें तो cold welding हो गया, diffusion welding, explosive welding, forge welding, friction welding, hot pressure welding, roll welding, ultrasonic welding. So these are different kind of solid state welding. तो इसमें से हमें cold welding, diffusion welding, then explosive welding, friction welding, ultrasonic welding. These are the kind of solid state welding जिसको हमें डिटेल में स्टडी करना है. नाउ सोल्डरिंग की अगर बात करें तो सोल्डरिंग हमें यहाँ पे रॉड के हिसाब से बहुत सारे हैं यहाँ दिए, बट हमें एक सोल्डरिंग का जो है थोड़ा सा ब्रीफ में हमें एक डिटेल स्टडी करनी होगी.
हमें टाइप्स पे नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे अदर वेल्डिंग प्रोसेसेस की बात की गई है, तो अदर वेल्डिंग प्रोसेस में जो एडवांस वेल्डिंग प्रोसेसेस हैं वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। सो दिस वन इज अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट अबाउट ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ओके, थैंक यू।